So yes, once again, good evening and welcome to today's session. So here in today's session, what we will understand is some features under the premium analytics segment, and this will be skewed towards the fundamental analysis. And to begin with, we will discuss investment ideas, followed by edge reports. Then we will focus somewhat on investor portfolio, investment themes. Post that, we will look into SME zones, then edge insights. Somewhat, we will see how we can post in the social platform, and then a little bit about the mutual fund. So this will be the flow of today's session. And in between, wherever you feel like that you need some, like you have certain queries, then you can put forward your questions. So the first thing is we'll begin is investment ideas. Now, ये investment ideas क्या है? So one thing, I'll keep it a mix of Hindi and English. Hope that works well for all. All right. ठीक है. So पहला चीज है investment ideas. Now, what is investment ideas? Now, as the name suggests, investment. So the Shantana, you have got muted. Can you just unmute yourself? yeah. Am I audible now, Swati? Yes, you are. Okay, fine. So investment ideas, जैसे name suggest करता है, so these are for long term purpose. Now long term purpose means at least more than a year, but in this investment case we say it more than 3 years time frame. तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हमारे इन हाउस जितने भी रिसर्च एनालिस्ट लोग हैं, we sit and we come up with certain companies which we feel that for the long term purpose will generate good returns or steady returns for the investors. Now what we do is we take into consideration both the historical, the present and future performance of these companies, and we prepare reports in detailed fundamental reports on the same. So जब आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज में जाओगे तो फर्स्ट थिंग इज यहाँ आपको रिपोर्ट मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है पीडीएफ का, वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे. सो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. Now here it will talk somewhat about the company's profile, and then if you click on the report, आपको ये रिपोर्ट पूरा देखने को मिलेगा, where we state about the company, its sales growth etc. certain parameters के ऊपर ये हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं. करेक्ट. Now post that, if you go here, this edge score, you will see a chart like this. Now what is this chart? I'll take a longer time frame. So this is the green band जो यहाँ पे accumulation zone depict करता है, and the red band which depicts the distribution zone. Now if you go through this report, there is this valuation segment जहां हम लोग internally value करते हैं a particular company and we arrive at a certain price points. Now after doing the valuation, we feel that at the current point Vinati Organics will see a support or an accumulation zone near 1600 to 1700 levels, and the same thing gets depicted here, 16 to 1700 levels, and here the company stock, you can start adding or accumulating in your portfolio, right? So this is what this level talks about, the green and the red band. Now we have the spider chart. So once we click on that, we see there are certain parameters. Now as I have shown you in the case study, हम लोग certain parameters लेते हैं and उसके basis पे company को judge करते हैं. Now in this case, in each and every case, what are the parameters? Growth, profitability, efficiency, solvency, valuation and quality. And we assign certain score out of 5 to each of these parameters. तो हम लोग को past, present and future analysis करने के बाद लगता है कि ग्रोथ में विनती ऑर्गेनिक्स को 4 देना चाहिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी 4.
solvency में 5 and valuation में 3, and then we come up with an H score that is 24 out of 30. Now we feel that any company which is having a score with 20 or more is suitable for investment purpose. Right? Clear till this point? If not, then please put forward your questions. I'll just see कोई questions है या नहीं. ओके, ओम प्रकाश जी, सॉल्वेंसी मतलब है, सॉल्वेंसी टॉक्स अबाउट द डेट प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, then it talks about the liquidity of the company and as well as it takes into consideration कि कंपनी की एबिलिटी है कि नहीं कि वो अपने ऑपरेशन से उस जो लॉन्ग टर्म डेट हो या शॉर्ट टर्म डेट हो उसको पे कर सके. सो दिस टॉक्स अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी. राइट, नाउ इज द की लेवल. नाउ आई हैड शोन यू कि आपका यहाँ पे जो 1600 1700 है, तो लोएस्ट वो आपका की लेवल बनेगा. एंड व्हाट इज द गैप? द लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड की लेवल के बीच में जो गैप प्राइस पॉइंट का डिफरेंस है वो गैप डिपिक्ट करता है. तो अगर हम इसको और इसको डिवाइड करके जो निकलेगा दैट इज 0.06 एंड लोएस्ट द गैप वो वाला कंपनी टॉप में शो करता है इस पर्टिकुलर लिस्ट में. So when to accumulate above the green zone or within the green zone? So whenever it is trading in the green zone, that is the time to accumulate, or depending upon the risk appetite, if it is somewhat close to the green zone, you can start accumulating at that point also. Right? So ये हो गया investment idea के बारे में. Now once done, I'll just check और कोई questions है कि नहीं. Fine, Abhishek sir, I'll just again explain about the zones. Say I'll take in Vinati Organics itself, just say. हाँ, सो हियर आपको देखने को मिल रहा है दो जोन्स, दो कलर के बैंड्स. एक है टॉप में रेड कलर का बैंड और एक है ग्रीन कलर का बैंड जो नीचे दिया हुआ है. राइट नाउ द ग्रीन बैंड वो डिपिक्ट करता है द लोअर पोर्शन और द एक्यूमुलेशन जोन where we find that it will be comfortable on the part of the investors according to our valuation that they can accumulate at this particular point. Similarly, whenever the red zone depicts that whenever the company's stock price starts to trade near this zone or at this zone, then you can go for distribution. Right? आप यहाँ पे इजी देख सकते हो कि जब ये इसके पास आया फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन का जोन बन गया. ठीक है. So whenever accordingly and also depending upon your risk appetite, you can go like accumulate near the green zone and आप अपने पोर्टफोलियो में से like in either in tranches or fully यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो whenever it's near the red zone. But keep in mind that these are for investment purpose, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है. Now these all okay. Now one more thing I'll want to show here is say Aisha Motors. Now यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि this key level is shown in red, not in green, unlike others. Now why is it so? So we will go to this company's Aisha Motor का levels, and we will see that since this company's price level is near within the red zone, that's why it is showing in red. राइट जो प्राइस लेवल्स यहाँ पे इस केस स्टडी में दिया गया था तो उसके टॉप बैंड या एक्यूमुलेशन जोन के पास ये ट्रेड कर रहा है एंड दैट इज व्हाई दिस इज शोइंग इन रेड. So all these case studies are updated on quarterly basis
and they are sometimes, again, if we feel that there needs to be some upgradation or downgrade in the like edge scores, like in the scores depending upon the analysis we do, we also do that. I just want to show in case of Aster DM. I'll show you. We had taken a cut of 1 since there has been a special dividend given by the company post this GCC segregation. So, and also now we need to see what will be the next leg of growth for the company post this segregation. So आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक का डाउनग्रेड लिया हुआ है, राइट? सो ये जो स्कोर्स है ये भी अपग्रेड एंड डाउनग्रेड होते रहते हैं. So these yellow जो circles है जिसमें 22, 21 लिखा हुआ है, these are the total scores, right? Okay. Now I'm done with the investment theme. So let's focus on edge reports. Okay. Now, what are edge reports? Now, edge reports is that, again, the research team, we come up with certain reports and infographics, and they are a mix of both technical as well as fundamental. I'll stick to the fundamental ones. So if you click on this all, तो आपको options दिखेगा, which are case study, जो मैंने अभी आपको दिखाया. Then if there is con analysis, infographic, which is a combination of both technicals भी रहते हैं, fundamentals भी रहते हैं. IPO note, stocks to watch is about technical, so I won't discuss about it. So case study already done. Now let's focus on con analysis. So just now earning season चल रहा है, and every earning season में the company interacts with the analyst team, right? And so इन लोग कॉन कॉल कंडक्ट करते हैं. Now we need to know कि that con calls are usually 1 hour long, bare minimum 1 hour long, and then it sometimes goes up to 1.5 hours, right? HUL के केस में it's 1.5 hours. एंड फिर उसके ट्रांसक्रिप्ट आने में भी टाइम लगता है. सो नंबर 1, वी यूजुअली फॉल लाइक हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इतना टाइम दे के वो पूरा रिकॉर्डिंग सुने या उसको लाइव सुने. सेकेंडली, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना भी उतना डिफिकल्ट हो जाता है. बेयर मिनिमम 15-20 पेजेस, उसको जाओ, मेजर पॉइंट्स को कोलेट करो. सो व्हाट वी हैव डन इज, वी at our backend, we listen to the con call, and then we highlight the major points which are necessary, or which we feel that it is highlights a major pointer for the company, and we collate it under the con call reports. So just let's have a look. Happiest Mind का latest आया हुआ है 7th May को आज ही. So here अगर आप click करोगे, you get to see some what is the quarterly update, थोड़ा बहुत उसका synopsis, and then we view the report. So यहाँ पे आपको उसके highlights, financial highlights मिल जाएगा, जैसे कि final dividend है. Since it's an IT company, it has also talked about the attrition rate, and here is the financial snapshot, both quarterly and full year का. Then if we go down, ये तो business performance है, business highlight segment wise दिया हुआ है, deal wins क्या क्या हुआ है, client matrix क्या है, everything in a very comprehensive manner, so that you don't have to go through that 15-20 pages. You just go through these 5 pages and the major points you'll get to know about the company. Simple, right? So this is about the con call report. Now let's see another report which I find very important and interesting, that is IPO note. Now IPO note, we know कि IPOs आते रहते हैं, and it becomes difficult to get to know the issue size. थोड़ा बहुत information यहाँ से मिलता है, कभी कोई और साइड से लेना पड़ता है, then what is the company into. So we have to collate news from a lot of information from a lot of places, and that becomes tedious. So what we have done is, firstly, we prepared those reports in a very comprehensive manner.
Here you also get an AI generated meter which indicates whether this particular IPO is poor, average, good or excellent. So आपका एक सेंस मिल जाता है प्राइमा फेसी किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. फिर if we open the report, so first it is overview, the issue size, issue details and the financial highlights, what is the company into, एक snapshot मिल जाता है. Then it talks about the company, what is the company into, its revenue mix, etc. So you see the geographical mix is also given in this case. Then the sector outlook, how the sector, what is the sector it is into, how that particular sector is performing, what is the size, etc. Then the competitive landscape, which I feel is very important because you need to know your the peers of the company where you're investing, how that particular company is faring in parlance to its or in comparison to its competitors. That is very important. So ये भी यहाँ पे show किया हुआ है. The promoters background and shareholding, very important. इससे आपको एक बहुत आइडिया मिल जाता है कि वेदर हाउ इज द गवर्नेंस फैक्टर ऑफ दिस कंपनी. एंड फिर आपको इसमें QIP का कितना शेयर है एक्सेट्रा. सो यू गेट टू नो अबाउट द promoters background. The risk factors are also stated. Then we come to the financials of this particular company. The SWOT analysis is also provided. And the last is the timeline of the same. कब से issue open होगा and what will be the date of the listing. Everything is given in this one particular report. So 16-17 pages में entire IPO का note आपको provide किया गया है. So you just read and you will get a hang कि whether this you should invest in this particular IPO or not. ठीक है? I'll see if there are any questions. Venkat sir, the IPOs are mostly on like selected ones. It depends, actually it depends upon the issue size. So depending on that, the internal team prepares report on the same. We don't provide any recommendation. We just provide you just gives you indication that whether this particular IPO as per our internal analysis is good, bad or average. No, we don't prepare on SME IPOs. All right. So that was about the IPO note. I'll then jump into the infographics. Now, infographic, as I have stated earlier, it's a mix of both technical as well as fundamentals. So I'll stick to the fundamental one. So here on 2nd May, we had something on MOM, month-on-month basis, change in sales of major automobile companies. That is in the month of April. So let's see what is it talks about. So somewhat a little description is given on the same. And here you will get to see the infographic. So which are the companies, what are the March sales data and the April sales data and with the highest change. So you get to see that M&M has the is the top performer in the sales Q month on month sales wise, right? So this is about the edge reports. Till here, any questions, please feel free to put it out. So now let's move on to the investor theme. Now, what is investor theme? So there are certain narratives, and these narratives move certain, it gives traction to certain industry or say certain sector, and accordingly there are certain stocks which gain out of those narratives. Now it can be it China plus one, or say some big capacity expansion is going on, or say during wedding season, or say during EV, like the EV thing which is going on. So those give traction to certain stocks,
And what we do is we identify such narratives and we prepare a small snippet and identify the stocks that want to benefit maximum out of that particular theme, and we put it under the investment theme segment. Now say suppose here we go to green hydrogen, right? Let's see. Once you get into it, it will first give you an idea what is it about, like what is hydrogen and what what is under it, why green hydrogen uses, and what are the government initiatives. You'll get a write up on the same. Post that, you'll click on the stocks. You will see there are certain, yeah, in this case, I think 6 stocks are listed. So 6 stocks are listed under this particular theme, and and then whether what is it, what is the relation of this particular stock with this company. Let's see what is it about. So here you get to see this read more option. Just click on that. सो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप दिखेगा, राइट, कि रिलायंस के इंडस्ट्रीज के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का क्या रिलेशनशिप है. तो यहाँ पे रिलेशनशिप, उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, एंड लास्ट में आपको एक देखने को मिलेगा कि इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. सो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलायंस को फायदा होगा कि नहीं, राइट. एंड यहाँ पे टाइम बैंड दिया हुआ है. अगर हम लास्ट 6 मंथ्स चेक करें कि ये पर्टिकुलर थीम के अंडर में जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए थे, हाउ दे हैव परफॉर्म. सो दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स बारिंग वन हैज परफॉर्म significantly well. And if I check 1 year's performance, it has also been like significantly good, right? So this is about theme. I'll see one more theme. वेडिंग देख लेते हैं. सो यहाँ पे वेडिंग के बारे में है, लाइक कॉस्ट पर वेडिंग क्या हो सकता है, व्हाट आर दी सेक्टर्स दैट स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नैरेटिव, एंड देन विच ऑल आर द स्टॉक्स. तो स्टॉक्स पे हमको दिखने को मिलेगा टाइटन है, इंडियन होटल्स है, मेट्रो ब्रांड्स है, वेदांत फैशन है. सो से सपोज आई गो टू वेदांत फैशन, राइट. हम इस पे क्लिक करेंगे एंड वही रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन और इम्पैक्ट क्या होगा. मतलब अगर वेडिंग सीजन आएगा तो वेदांत फैशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. सो हियर वी सी द इम्पैक्ट इज पॉजिटिव. एनी क्वेश्चंस टिल हियर? Okay, since there are no questions, so I'll move forward. Okay, there is one. Fine. Thank you, sir. Girish, sir. Thank you. All right. Now, post-investment themes. Let's go to investor portfolio. Now, investor portfolio में अगर हम लोग जाते हैं, there are 2 segments. One is individual and the second one is institutional. So, what is it about? Now, we know there are certain ACE investors or investment houses. When they take position in a particular company or exit a particular company, तो वहाँ stock में changes आते हैं, price में impact आता है, right? And secondly, we also tend to follow or replicate certain investors portfolio कि हमें लगता है कि उन्हें हमसे ज्यादा पता है, and we feel like कि if we clone their idea, then we can benefit out of the same, right? So what we have done is here under investor portfolio, we have listed down all the major or ACE investors who are there in our country on the individual basis as well as on institutional basis, right? So for the time being, let's stick to the individual ones. So यहाँ पे प्राइमा फेसी आपको देखने को मिलेगा उनके अंडर में कितना होल्डिंग्स है, estimated holding amount, and which is the top performer, and this is a 3-month change. इस इनके होल्डिंग्स में टॉप परफॉर्मर कौन है, राइट? नाउ से सपोज आई गो टू राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट्स. I click on this. So you get to see a very good snippet out here, which underlines all the major or highlights all the major points which you want to look into as an investor in a Rakesh Jhunjhunwala's holdings. The first thing is what is the size as, and then we have the number of holdings.
किस कंपनी में उनका सबसे ज्यादा होल्डिंग है, विच इज एप्टिक 44.32% ऑफ दिस टोटल पोर्टफोलियो, एंड रीसेंट चेंजेस उन्होंने किसमें किया है, एंड रीसेंट डील्स किसमें हुए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, स्निपेट सॉरी। देन वी कम कि सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा एलोकेशन किस में है। सो वी सी डायमंड एंड ज्वेलरी में, एंड यहाँ पे मार्केट कैप वाइज आपको देखने को मिल जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा है, वेदर इट्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। A small introduction is given out here. So this is what it looks like. Now let's go to the shareholding pattern. Under the shareholding, we see the names of the company and किसमें सबसे ज्यादा उनका होल्डिंग है, and this is as per the latest quarter. So you get to see the number of shares and the percentages and which companies it is invested into. Then the most important part of the this particular segment is the key changes. Now where the changes have been done. So latest 24th April को हुआ था करोड़ वैश्य बैंक में, change हुआ था from 4.62 earlier quarter, now this has come down to 4.33%. And here आपको ये red वाला arrow, downward arrow indicate करता है that this particular investor has reduced his stake in this particular company. Correct? So this is what it shows. I'll just see. Recording, I'll let you know in some time. Om Prakash sir, what is updated? Like which topic you are talking about? Will it be like it will be helpful if you just clarify the same. Right? So this was about Rakesh Jhunjhunwala Associates. Now let's portfolio is updated like as I said every quarter. See, I'll just show you once again shareholding. देखिए क्वार्टर वाइज यहाँ पे अपडेटेड है, अब देख रहे हो यहाँ पे ये लेटेस्ट क्वार्टर का शो कर रहा है। ठीक है, साइड में आपको क्वार्टर मेंशन रहेगा। जैसे हम नेक्स्ट वाला ही लेते हैं, आर के दमानियन एसोसिएट्स। सेम यहाँ पे उनका रिटेलिंग में सबसे ज्यादा स्टेक है, एंड अगेन लार्ज कैप फॉर्म्स द मेजर, 97% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इनटू लार्ज कैप। शेयर होल्डिंग में हम देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स में 75% है, एंड की चेंजेस में लेटेस्ट इज 28 अप्रैल वीएसटी इंडस्ट्रीज में पहले 30.71% था, which has gone up to 32.66%. Right? So this is what is about investor portfolio. So if we want, we can also get into their, have a sneak peek into their portfolio and understand which sector and which industry these ace investors are like positive about, and we can take our investment bets accordingly. Okay. Now let's move to investment theme is over. Now let's move to company filing. Now, what is company filings? So every like whenever a company comes up with any event update, anything, but he like it has to publish the same in the exchanges, be it NSE or BSE, wherever it is listed. If it's listed on both the exchanges, and in both the exchanges, it has to inform like what are the recent either changes or whatever happening. It has to report the same on the exchange, and those are known as exchange filings. So what we have done is under each heading we have collated those findings and we have presented it under one heading stating company filings. से सपोज मुझे हर कंपनी में नहीं जानना नहीं है, जा जाके इंडिविजुअली चेक नहीं करना पड़ेगा
कि बोनस या डिविडेंड किस में आ रहा है या एजीएम किस में होगा, व्हाट वी कैन डू इज वी कम टू दिस ऑप्शन कॉल कंपनी फाइलिंग्स एंड से सपोज मुझे अभी जानना है कि एनुअल रिपोर्ट सिंस Q4 का रिजल्ट्स आ गया है, तो एनुअल रिपोर्ट किस किस में आ चुका है। आई गो टू दिस और मुझे मिलेगा यहाँ पे न्यूज़ कि एनकाई व्हील्स में शायद एनुअल रिपोर्ट आ गया है, राइट। सो आई डिडंट इवन गो टू दैट कंपनीज एनकाई व्हील्स site, I mean to that page. I simply got into the annual report segment of company filings and मुझे यहाँ से मिल गया कि इस कंपनी ने अपना एनुअल रिपोर्ट फाइल कर दिया है, राइट। यू सी ऑल द कंपनीज डेट वाइज जिस जिसने किया है उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया है, करेक्ट। नाउ से सपोज मुझे जानना है कि विच कंपनीज आर गिविंग आउट डिविडेंड्स और गिविंग आउट बोनसेस। सो फॉर द टाइम बीइंग सिंस इट्स लाइक Q4 तो यूजुअली बहुत सारे कंपनीज डिविडेंड्स देती हैं। सो लेट अस चेक कौन कौन से कंपनीज ने डिविडेंड्स दिए हैं। सो आई टाइप डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड आ गया एंड हियर सो 7th में को नवीन फ्लोरिन ने देयर इज समथिंग रिलेटेड टू डिविडेंड। सो लेट्स चेक, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे उसका डिटेलिंग्स मुझे मिल जाएगा, हियर डिविडेंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली विद बोनस ऑल्सो, सो टाइटन इंटेक ने कुछ एक्सटेंशन किया है रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस का। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फाइलिंग्स में से डिटेलिंग्स मिल जाएगा। नाउ से सपोज इतना सारा फाइलिंग्स है, राइट, और सॉरी एंड मुझे लाइक फ्यू ऑफ लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली फ्यू ऑफ दीज, सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाट आई डू इज आई बुक मार्क, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है देन तभी मैं आपको शो करूंगी। से सपोज मुझे सिर्फ एक्विजिशंस जानना है। सो व्हाट आई डू इज ये स्टार को मैं स्टार पे जाके क्लिक कर दूंगी एंड यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्विजिशन एडेड टू माय कंपनी फाइलिंग्स, राइट। सो आप देखेंगे ये जो थर्ड वाला है आफ्टर म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे माई स्टॉकेज बोल के एक ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट और यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का आइकन मिलेगा। पोस्ट क्लिकिंग ऑन दैट आपको देखेंगे कि कंपनी फाइलिंग्स में, माई कंपनी फाइलिंग्स में जितना भी मैंने स्टार मार्क किया है वो सारा यहाँ पे आपको सिर्फ फिल्टर्ड आउट वे में मिल जाएगा कि जितना जितना मुझे इंटरेस्ट था वही मुझे दिख रहा है एंड बात बाकी नहीं, ठीक है। So I'll see what are the questions here. Company name wise, I'll just I'm coming to it. So this is how you can check the company filings. Now say suppose there is a question कि अगर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी है, से सपोज ब्रिटानिया, एंड मुझे सिर्फ उसी का जानना है, या से सपोज एस्टर, तो मुझे उसी का जानना है कि उसके कंपनी फाइलिंग्स में क्या क्या है, राइट। सो व्हाट आई डू इज से सपोज मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ ब्रिटानिया एंड आप देखोगे यहाँ पे एक अपडेट सेगमेंट है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड हियर यू विल गेट द अनाउंसमेंट सेगमेंट। अगेन NSE BSE का टॉगल है आप, एंड नाउ यहाँ पे सारे फाइलिंग्स डेट वाइज मेंशन्ड है। अगेन यू ऑल्सो यू हैव अ फिल्टर वेयर जो लिस्ट कंपनी फाइल्स में आप लोग देखे थे द सेम इज रेप्लिकेटेड हियर। सो से सपोज आई जस्ट वांट टू नो अबाउट डिविडेंड, जस्ट अ सेकंड, and here the first filing is talks about dividend. Here you see 73.5 का फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन है, राइट। सी एंड फिर यहां से आपको डिटेलिंग मिल जाएगा, राइट। दिस इज हाउ यू कैन चेक कंपनी वाइज, इंडिविजुअल कंपनी वाइज
company filings. Yeah, you can see like Girish sir, you can see the dividends of under this announcement के बगल में either you can go on the dividend, type dividend. जो मैंने कंपनी फाइलिंग्स वहां था द सेम इज रेप्लिकेटेड हियर आल्सो एंड यहाँ पे अगर आपको हर को जितना भी फाइलिंग्स हुआ है बीएससी में वो आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा. देयर इज नो चेंज इन दैट. सो आपको यहाँ पे डिविडेंड ऐसे मिल जाएगा. एंड इफ यू गो टू द कॉर्पोरेट एक्शन सेगमेंट आल्सो यू गेट टू सी डिविडेंड का डिस्क्रिप्शन, राइट. There is Rahul sir, please, I'll ask like support to help you with the same for whichever sessions recording you are asking for. I'll ask the support team to get back to you. So this was about the company filings, and one more feature which I'll just quickly show here, which I find very interesting. Say financials के बाद में you get to see the shareholding pattern of the company, and here you have the promoter public. and अगर आप DII को expand करोगे आपको पता भी चल जाएगा कि under DII कौन सा मतलब कौन सा like be it mutual fund, banks or insurance, or like which of it has more interest or inclination towards this, whether they are increasing or decreasing their stake. So आपको ये graph से भी you can study the trend and understand whether these mutual funds or whether the DII FII has interest in this particular company. So this is a very amazing and important feature, shareholding pattern. So just thought of showing it, right. uh, where to see Q4 results. So result segment is, again I'll show if this is a very basic thing. So आप fundamentals में जाओगे, अब यहाँ पे result segment आएगा overview के बाद. Here you see quarterly, half yearly and annual. So last 10 quarters का दिया हुआ है, half yearly में last 10 half years का दिया हुआ है, and annual में last 10 years का result दिया हुआ है, both on consolidated and standalone basis. So this is where you get the Q4 results, Q3, Q2, Q1. That is last 4 quarters का आपको यहाँ पे result मिल जाएगा. And if you expand this, the best part is you don't even have to calculate. We have given you a YOY and QOQ basis calculation also. See, QOQ में 4% का डिक्लाइन था एंड YOY में आपका 1.15 का इंक्रीज है. एंड EBITDA में भी इफ यू एक्सपैंड QOQ YOY ग्रोथ के साथ we also give you calculated EBITDA margins. So you don't have to even calculate, everything is given here. Same goes with PAT also, right? CS priority is nothing. What happens is sometimes the company standalone results ही रहते हैं, and then after a point it gets into consolidated through some JVs or something. And in CS priority what we do is we give all the results, standalone भी consolidated सारा जब से वो जो था वो हम लोग देते रहते हैं. So this is about CS priority, right? Now let's, once this segment is done, hope everything is clear. Now we will go to the SME zone. Now what is SME zone? These are stocks just like other stocks, but ये SME zone में. Now the SME stocks में liquidity का थोड़ा बहुत issue रहता है and it's little bit riskier than the normal ones. And that's why to help or to like guide investors or to safeguard investors' interest, these exchanges have put them on a separate platform known as the SME platform. ठीक है? And ये इसमें
there are two major differences. One, these comes up with the result on half yearly basis and not on quarterly basis. Two, these stocks doesn't sell or gets bought in one single number. You have to buy or sell it in number of lots, and the lot sizes is inversely proportional to the price. That means higher the price, lower the lot size, and vice versa. ठीक है? There are. So sector rotation is it won't be taken today. सेक्टर रोटेशन का अलग सेशन होगा, आप उसमें पूछिएगा. CS प्रायोरिटी सर, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू. Anil sir, I'll just explain it in few minutes. I'll just complete this SME segment first. So SME में क्या है? So it comes up with its result on quarterly half yearly basis and not on quarterly basis. And second, अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आप एक शेयर सेल या बाय नहीं कर सकते हो, आपको लॉट में करना पड़ेगा. एंड the lot size is inversely proportional to the price. Higher the price, lower is the lot size. So I'll just take a quick look at one example. Network People Service, it's in NSE. कि आप NSE में कैसे चेक कर सकते हो. Just a second. Network People Services. हाँ, राइट. देखो आपको पहले ही दिखेगा कि इट इज इन SME. ये SME इंडिकेट करता है. एंड जस्ट फेस वैल्यू के नीचे आपको ये लॉट साइज का नंबर मिल जाएगा, राइट. ये 100 में होता है. सो अगर आपको खरीदना है तो आपको 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, एंड अगर बेचना है तो अगेन ये 100 ही आपको बेचना पड़ेगा एट वन गो, राइट. ओके. ओके. सो SME का टैब किधर है? आई जस्ट शो विवेक सर. आप एक्सप्लोर सेगमेंट में गए, हमारे जो ऐप का जो होम पेज है, एक्सप्लोर सेगमेंट, वहां पे आप देखिएगा नीचे SME जोन बोल के है, राइट. आप वहां पे क्लिक करेंगे, आपको जितने भी SME स्टॉक्स है उसमें आपको ले रिवर्ट मतलब they will take you, it will take you there. Okay, now I'll just show what is CS priority. So Whirlpool was like a company which was coming up with its result on standalone basis. उसका कोई associate, JV या कोई subsidiary नहीं था, right? Now, after a point, I think in 2018, it formed a JV. I mean, it acquired Elica PV, and it formed and got into consolidated. Now, अगर आप यहाँ पे consolidated देख रहे हो तो ये 2018 से start हो रहा है, right? एंड अगर आप स्टैंड अलोन देख रहे हो तो यहाँ पे 2015 से दिया हुआ है. सो देयर इज दिस डिफरेंस कि यहाँ पे 15 से है एंड कंसोलिडेटेड में 18 से है, राइट. व्हेन यू गो टू CS प्रायोरिटी आपको वो डिफरेंस नहीं मिलेगा. आपको एकदम 15 वेदर इट्स लाइक कंसोल या स्टैंड अलोन में कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा. ये 15 से डायरेक्ट आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा. सो दिस इज अबाउट CS प्रायोरिटी. ओके. Now let's move to Edge Insights. Okay, in the meantime, I will show you a little bit about StockEdge Social. So here are these 9 dots. If you click on that, यहाँ पे StockEdge Social आता है. आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये होम पेज पे लेके जाएंगे.
So here it's like learn. तो आप स्टॉकेज लर्न पे जाओगे एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइप करोगे. सो आपको सारे सेशंस के यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, राइट? जितना भी सेशंस होता है उसका सारा सेशंस का रिकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगा. सो वे वी नीड टू गो इज वी नीड टू टाइप स्टॉकेज learn, add to search and recording, right? And here you see all the clubs. The first two are recommendations, the others are doubt solving. So if you have any doubt, be it technical, fundamental, or pertaining to FNO or mutual fund, please post your queries in this particular clubs. We'll be more than happy to help you out, correct? So this is about StockEdge Social. Now let's jump into our today's discussion. So I'm already running out of time. So yeah, I'll make it quick. So then we have this segment called Edge Insights. So what is Edge Insights? So like पूरे दिन भर कुछ ना कुछ मार्केट में हो रहा है, be it technical or fundamental. So जो major points होते हैं, we highlight it here in a small snippet, and be it technical or fundamental. Mostly हम लोग यहाँ देख रहे हैं, and this segment gets updated every day, end of the day, EOD update होता है. So that's why it's showing 6th May. So 6th May, it's all technicals. So I'll search for something which talks about fundamental, right? So here आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रिटानिया का कॉन कॉल एनालिसिस करके हम लोग ने दिए हैं. So अगर if I click on this, see it takes you into the report segment, and on 6th May we have come up with the con call report on the same. यूएस ल्यूपिन में एफडी का कोई फाइलिंग हुआ है, एंड इफ अगेन हमें डायरेक्ट फाइलिंग पे ले जाएगा, एंड यू कैन क्लिक एंड चेक व्हाट इज इट ऑल अबाउट. एंड यहाँ अगेन ऑल फाइलिंग्स रिलेटेड टू यू. अगर आप ऑल कंपनी फाइलिंग्स में जाएंगे तो आपको फाइलिंग्स पे लेके जाएगा, एंड इफ यू क्लिक ऑन द सिमिलर स्टॉक्स, सो आपको यूएस एफडीए कौन कौन से कंपनीज में यूएस एफडीए रिलेटेड हैपनिंग हुआ है उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा, राइट? आई शो इट वंस अगेन. से दिस इज ल्यूपिन. ल्यूपिन में यूएस एफडीए रिलेटेड कोई फाइलिंग हुआ है. इफ यू गो हियर इन दिस एरो, तो वो आपको डायरेक्ट उस पर्टिकुलर यहाँ का फाइलिंग्स पे ले जाएगा, कंपनी फाइलिंग्स पे. इफ यू क्लिक ऑन सिमिलर स्टॉक्स, it will talk about all the companies which has come up with any filings that has to do with US FDA. Edge Insights is here. I'll just show up. Explore Premium Analytics, Pro Analytics, and just below that you get the Edge Insights segment. Edge Insights is nothing. Those are the snippets of anything like prominent which has happened in a particular day, be it pertaining to technicals or fundamentals. We provide a snippet of the same, right? So that at the end of the day you get to know कि कहाँ पे क्या हो रहा है, which company में कौन सा like major क्या event हुआ है. Right? Okay, now we will talk about mutual funds. So here I won't be talking about कि आप mutual fund में कहाँ invest करोगे, what are the parameters that you should look into. No, for that we have a separate club on social. I'll just talk about कि क्या क्या features आपको यहाँ पे मिलेंगे, right? So if you have any question related to fund like mutual funds, please go to the social platform. There you have a like particular club which is assigned only to mutual fund, that is mutual fund club, and post your queries there. There your queries will get reverted
or solved within the 24 to 48 hours of your posting. All right. So yeah, mutual funds में the moment you go to this segment, you get to see AMCs. All the major AMCs are highlighted here, are put out here. So आपको सबसे पहले मिलेगा SBI mutual fund, the AUM it is handling, and what all are the schemes that are there under it, right? You click on that, you get to see इक्विटी में कौन कौन से फंड्स हैं, डेट में कौन कौन से फंड्स हैं, हाइब्रिड में कौन कौन से फंड्स हैं, ठीक है। एंड लाइक टाइमलाइन वाइज इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये सारे फंड्स का टाइमलाइन वाइज कैसे परफॉर्मेंस रहा है, you get to see that also. Then you go to the key person and you will see the SBI mutual funds are handled by who all individuals and how the AUM has fared. This is about all month wise and this is class wise and scheme wise, right? तो आपको यहाँ से पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि दिस पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है. Now say I'll take a SBI mutual fund itself and I'll stick to equity and then I'll go to SBI PSU fund, the first one. So यहाँ से the first we get to see the NAV performance. Then here also it talks about how the NAV has fared over a period of 5 years. You see the entire timeline, 5 years से 1 day तक. And the most important part is the holdings. So ये आपको holdings का summary है कि equity में कितना है और cash और liquid में कितना है. And domestic equity, now this is again आपका एवरी मंथ वाइज यहाँ अपडेट होता है, आप देख रहे हो, ये आप मंथ वाइज यहाँ पे चेक करके अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हो, राइट. जैसे कि यहाँ पे मार्च 2024 है, एसबीआई में कौन कितना क्या चेंजेस है, मार्केट वैल्यू, होल्डिंग का मतलब टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज इसमें है, और आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा. इफ आई गो अ पीरियड अ मंथ बैक, I will say कि again SBI was the largest or had this fund as a highest holding in SBI and पहले वो 9.7 था, but this month it is 11%. See, so आपको समझ में आ रहा है कि changes कैसे हुआ है and कौन कौन से में हुआ है वो भी आप देख सकते हो. Then we talk about the fund manager. Okay, AUM is there. How this particular fund's AUM has fared. So April 2023 it was 557 crore and now it has gone up to 1876 crore. Then we have who's the fund manager who is managing this particular fund, what is experience like, what are the funds which has been handled by him and how those funds have performed. So you see that more or less the returns generated by this particular fund manager has been quite good. So, Malika Arjun sir, what is beta in ratios? So it'll be like, please put it forward in the fundamental club and we'll take it up there. Okay, there is this question on ETF. So I'll just show. Wait a second. So if you go to classes, आप नीचे जाओ और आपको यहाँ से ETFs मिल जाएगा, right? सारी ETFs आपको यहाँ से मिल जाएगा. Again I'll show. You go just AMC के बाद आपका classes है. And under classes you have ETF, right? And all are listed here. Okay, so this was it about today's session. Hope everything is clear, and wherever you feel there is some question pertaining to any company or mutual fund, do post in the respective clubs.
so that it gets resolved at the earliest. And there we will be happy to help you regarding recordings. Uh, yes, beta is related to volatility, Mallikarjun sir. And any questions you put forward in the social platform, we are always there to help you out. If not, get in touch with the support team. They'll be they will guide you what to do and what not to do. And thank you. Hope you have enjoyed today's class. Thanks a lot. Good night.